Come in.
लास्ट क्लास में एप्लीकेशन लेयर में उसके डिफरेंट फंक्शंस को समझ रहे थे जो ऑनलाइन क्लास थी आपकी। उसमें एक टॉपिक क्या चल रहा था, डीएनएस। तो डीएनएस का फंक्शन तो सबको समझ में आ गया। करता क्या है डीएनएस? रिजॉल्व करता है, और खासकर स्पेशली डीएनएस is responsible for domain. डीएनएस किसके लिए? Yes, you can say unique name of any website. Actually, domain is not only related to unique name of website. You have already studied it in case of MCSC. Domain is used for centralized handling of the whole network. You can define user at the server, and these users will log on at any machine of the network. That's why we can set different security measures at the server, and as per the security measures, user can access the network node. Fine. It's okay. We can also create a web server in the domain, and that web server will provide the facility to access a website. Fine. For example, if this is our local network and it has many nodes, and in this network there is a server, this server can be a domain controller, DC, recall it. Then at this DC, we can define different users like user 1, user 2, user 3. These users will log on at the system, client machines. Now, if I am going to create a web server in this network, now coming. Now this is a web server. What is this? This is web server. In this case, suppose our domain name is CIMAGE.in. And you all have defined a web page. Fine. Web page for CIMAGE, for your own college. And now you all would like to access the web page from any node of this network. In that case, that web page, which name can be www.cimage.in. Now, this is the concept of domain. So domain means not only the name of the web server. Domain means the name of the domain controller. Fine. Now, you would like to access this image.in from any client machine. But right now, we are only talking about a single network. If there are some more networks in the world, suppose that you have connected your network, your local network, to any ISP. This is ISP. In this case, if
some users are available here. These users are also willing to access the CIMAGE website. And these users have internet connections. Internet connection. In this case, your network should be also available on public network, because ISP means public network. In this case, this is your local network, but for your local network, there must be a router. And at this router, there must be public IP address. With the help of this public IP address, because this public IP address is unique in the world, anyone can hit your website. Fine. In case if you have any domain infrastructure, and without any domain infrastructure, you would like to host your website in the public network, in that case, you will have to purchase a domain. You will have to register your domain in through any third-party service provider. Third-party service provider. Fine. But in this all scenario, there is a vital role of this DNS. Because if a user from this laptop hits www.cimage.in and your server is in this network, in your own network, and this user may be in Australia, America, UK, England, anywhere in the world, what will happen? In this case, only DNS is capable to search your domain in the public network and provides connectivity to this remote user, ये DNS ही कैपेबल है इस टास्क को करने में। जब आप इस अपने सिंगल नेटवर्क में भी वर्क करते हैं तो ये डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ एक DNS भी रन कर रहा होता है, बट इस वक्त में आपका ये DNS सिर्फ और सिर्फ लोकल होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको पब्लिक नेटवर्क पर लेके जाएंगे, ये मल्टीपल DNS के साथ मिलकर वर्क करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब इस तरीके का मल्टीपल DNS का केस होगा तो DNS किसी यूजर को, मतलब कोई भी यूजर जो आपके वेबसाइट को हिट कर रहा है, उसको इस पर्टिकुलर DNS तक कैसे पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ISP से कनेक्टेड है, इसका DNS अलग है, दुनिया के बहुत सारे DNS को क्रॉस करके इसको आना पड़ेगा इस DNS तक। आखिर DNS काम करता कैसे है, सर्च कैसे करता है, ये समझना है। नाउ DNS दो तरह की क्वेरी करता है। DNS क्वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कहलाता है इटरेटिव क्वेरी। दूसरा कहलाता है रिकर्सिव। In case of iterative query, क्या होता है वो देखो। Iterative query can be done at a single DNS server.
So for example, if a user of this network tried to access this web page, in that case it will request, and its request will reach to this DNS server. This DNS server will check that it is available in my record or not. Record means host record and pointer record. अगर इस DNS सर्वर को अपने रिकॉर्ड में ये मिलता है, देन वो रिप्लाई करता है. अगर मिला, फॉर एग्जाम्पल मिला, इट्स ओके. क्या किया, इसको रिप्लाई कर दिया. अब यहां पे मान लो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लोकल नेटवर्क है और ये यूजर जो है फ्लिपकार्ट को हिट करता है. तो फ्लिपकार्ट तो आपके नेटवर्क में कहीं है नहीं. जब वो डीएनएस को हिट करेगा तो इस केस में डीएनएस का क्वेरी अगर इसके लिए है तो आंसर इज ओके, गुड. बट इसके लिए है तो क्या आंसर आएगा? नो. सीधे सीधे रिप्लाई आएगा फ्लिपकार्ट नहीं. तो जब कोई क्वेरी सिंगल डीएनएस तक ही लिमिटेड हो, सिंगल डीएनएस में चेक होगी, रिकॉर्ड में अवेलेबल है, देन इट्स ओके. नहीं अवेलेबल है, देन नेगेटिव रिप्लाई. दिस टाइप ऑफ क्वेरी इज नोन एज इटरेटिव क्वेरी. ये सिंगल डीएनएस में. लेकिन क्या इटरेटिव क्वेरी रखने पे फ्लिपकार्ट वेबसाइट को जब नहीं खोल सकते हैं तो फिर कैसी क्वेरी रखनी चाहिए? तो दूसरा रिप्लाई आता है रिकर्सिव क्वेरी. रिकर्सिव क्वेरी में ये इटरेशन बार बार होता है और यहाँ मल्टीपल डीएनएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. मींस इटरेटिव क्वेरी मींस सिंगल डीएनएस and recursive query means multiple DNS. Now, if this type of query is available at your DNS server, in that case, this DNS server will first of all find this record in its own list. If it is not getting that record, then it will forward this query to next DNS server, means to ISP. Then ISP will forward to next DNS. Finally, if Flipkart server is available here, this is Flipkart server. In that case, the DNS related to this Flipkart will reply. Fine. This is iterative and recursive query. That's why I have told there is a very vital and very important role of DNS in a domain infrastructure. और जब आप अपना डोमेन रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसी डीएनएस पे आपका रिकॉर्ड क्रिएट होता है, तब जाके फाइंड आउट कर पाते हैं. इसीलिए मैं मैक्सिमम आपको जब पिंग हिट कराता हूं तो कहता हूं पिंग करो किसको, लाइक फ्लिपकार्ट को. मे बी साइट नेम इज रॉन्ग, flipkart.com. आपको रिप्लाई मिलता है, आईपी से रिप्लाई आता है. क्यों वो रिप्लाई आ रहा है? क्योंकि डीएनएस है. अंडरस्टैंड? फाइन, नोट डाउन इट. This is the domain name, CIMAGE.in. Suppose that its IP is our CIMAGE has also public IP 172.19.20.30. This is not the exact IP. This IP. Then, if you will ping CIMAGE.in, then you will get reply from 172.19.20.30. Which service has converted it from name to IP? DNS. Fine.
Yes. Host not host. Host may and pointer. Host record, I have taught you in the last class. Host record is created in forward lookup zone and pointer record is created into reverse lookup zone. And host record is used to resolve name into IP address, and pointer record is used to resolve IP into name. Open that window also. Open that. No, it's fine. They're not drawn in picture. It is not important. So, government is responsible for government. Yes, this is responsible for government to IP. Not the Domain to IP. Look, we are comfortable with name, but in our IT infrastructure, there is no place of any name. All queries, all kinds of activities are done with a numeric value. And here, the numeric value is logical identity, logical address, and this logical address is IP address. That's why to resolve the query, IP address is required, and you are putting name. So there must be a service which will convert it into IP address. Fine? Yes. www.google.com is also Domain. a domain. Hmm. And sir, when we search anything in that domain, like when we search for Facebook or Twitter or anything, that are also domain. Domain. And how that thing works, sir? Search Because one domain is inside another domain. right. Because at the Google page, you can see many links. Suppose Google, you have typed, fine. Then you have given Flipkart. After giving the Flipkart, there are many options. But at all those options, when you will move, you move your mouse pointer. In that case, it is highlighted. And when you click on that particular link, then it redirects the Google page to the Flipkart page. Redirection. कोई रिडायरेक्शन नहीं, रिडायरेक्ट करेगा तो क्या हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप ही वेबसाइट बनाते हैं, अभी आपने सीनियर बैच के वेबसाइट्स का प्रेजेंटेशन भी देखा, बहुत अच्छा था. वो क्या कर रहे थे? मल्टीपल उन्होंने डेटाबेस बनाया. जो मुझे जितना तक दिखा, आपको मेल भेजने की फैसिलिटी थी उसमें जो प्रोजेक्ट हुआ था. बस आप क्लिक कीजिए, वहां से एक मेल चला जाएगा. जैसे ही यूजर अपना कंप्लेन डालता है, कुछ कंप्लेन वाले भी थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे,
उसमें कुछ कंप्लेन वाले भी थे, कंप्लेन जैसे ही गए क्लाइंट को अपना उसका मेल आ जाता है रिसीविंग, अगले को भी मेल चला जाता है, रिकॉर्ड में भी होता है। तो आखिर मेल कैसे चला जाता है? उस बच्चे ने मेल सर्वर तो बनाया नहीं, उसने एक लिंक क्रिएट किया जो उस वेब मेल सर्वर से कांटेक्ट करता है एंड देन मिल जाता है। आप इवन कि आप कहीं भी पेमेंट भी करते हैं, आप जियो से जियो का रिचार्ज करते हैं, ऐप तो आप यूज करते हैं जियो का, लेकिन वहां पे मल्टीपल वे होते हैं जिसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। यूपीआई में भी मल्टीपल है, फोन पे है, गूगल पे है, याहू पे है, पता नहीं बहुत सारे पे हैं। अब जैसे ही आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो बाकी की चीजें लिस्ट में आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल उसमें आपने गूगल पे सेलेक्ट कर लिया, तो गूगल पे को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं वो रिडायरेक्ट हो जाता है आपके फोन के गूगल पे पे, और फिर वो बोलता है कि आप अपना गूगल पे ओपन करें, वहां से कंफर्म करें, वहां से पेमेंट करें। तो अब ये आपका जियो का ऐप उस गूगल पे के ऐप से लिंक हो जाता है। आफ्टर योर कंफर्मेशन पेमेंट आप गूगल पे से जियो को करते हैं और जियो फाइनली आपको रिचार्ज करता है। तो ये क्या हो रहा है? रिडायरेक्शन हो रहा है, रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यही चीज तो हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इनसिक्योर है, वो आपसे सारे कुछ पिन वगैरह जो भी है, पिन पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट है, सब कुछ जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब मांग, ऐसा नहीं कि कोई भी रिडायरेक्ट करे। ओके, नाउ वन मोर टर्म इन डीएनएस। डीएनएस में एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं केसिंग। ठीक है, अब ये क्या है? केस मेमोरी पढ़ा है, केसिंग समझते हो? हाँ, कैश मेमोरी क्या उसका फंक्शन? ठीक है, वो अपने पास में डेटा स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। परफेक्ट। तो वो टेम्परेरी स्टोरेज करके आपकी स्पीड को वो हाई कर, आपके मशीन की स्पीड को हाई करता है, अगर हार्डवेयर लेवल पे समझ। अब अगर ऐसा ही टर्म आपके डीएनएस में डाला जा रहा है तो ये इतना तो क्लियर हो गया कि केसिंग मींस स्टोरेज ऑफ डेटा। बट विच टाइप ऑफ डेटा? कंप्यूटर में तो समझ में आता है, जो फ्रिक्वेंटली हम फाइल यूज कर रहे हैं, फोल्डर यूज कर रहे हैं, ड्राइव यूज कर रहे हैं, वैसा डेटा, या फिर जो हमारे रैम और केस मेमोरी और प्रोसेसर का पढ़ेंगे तो रैम में पड़ा हुआ डेटा को ला करके यहाँ रखना, फिर उसको प्रोवाइड कराना, इस तरीके से अलग अलग टर्म्स। बट यहाँ पे केसिंग में नो डाउट स्टोरेज ऑफ डेटा होगी, लेकिन डेटा क्या होगी? आपकी क्वेरी। हाँ, डीएनएस में ही हम इसको पढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है क्वेरी आएगी यहाँ पे। अब अगर ये क्वेरी है तो क्वेरी किस चीज की है? डिफरेंट डोमेन्स की। तो क्वेरी अगर डोमेन्स की है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सीमेज को हिट किया तो सीमेज डीएनएस के केस मेमोरी में जाके स्टोर होगी, और जितनी भी सर्चिंग हुई, अगर रिकर्सिव, नो डाउट रिकर्सिव क्वेरी यूज करेंगे अगर हम आउटसाइड से, तो डीएनएस ने क्या किया? केस मेमोरी में इसको डाल दिया, डोमेन को। डोमेन में यहाँ पे एग्जांपल सीमेज को ले लें। फर्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट हिट करते हैं तो लंबी चौड़ी क्वेरी करने के बाद वो पेज ओपन। आप लोग कभी गौर कीजिएगा कि आपने अगर एक पेज ओपन किया है तो फर्स्ट टाइम वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ओपन हुआ, लेकिन सेकंड टाइम जैसे ही हिट किया फट से ओपन हो गया, फट से ओपन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डीएनएस अपने केस में इस क्वेरी को स्टोर कर लिया कि आखिर फाइनली वो कौन सा डीएनएस है पब्लिक नेटवर्क पे
जो रिप्लाई करेगा। तो फिर आपकी क्वेरी नेक्स्ट टाइम जब आप हिट करते हैं तो आपकी क्वेरी इमीडिएटली डायरेक्ट उस डीएनएस को हिट करती है। इससे आपका डीएनएस का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, आपकी वेबसाइट सर्चिंग इजी हो जाती है, फास्ट। तो स्टोरेज ऑफ डेटा में क्वेरी में क्या रखेगा, डिफरेंट डोमेन्स। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आया, फास्ट सर्चिंग, ऑफ रिकॉर्ड, फाइन। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। अब आप इसको जिस तरीके से देखिए, जब भी कोई इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए कि व्हाट इज केसिंग इन डीएनएस, तो आप डायग्राम्स डालें, मल्टीपल डीएनएस बनाएं, फिर उसको समझाएं, 2 लाइन की थ्योरी लिखें, फुल मार्क्स मिलेगा अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो। और अपने कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इस तरह का आंसर अगर आप करते हैं और ऐसे अगर आप चीजों को याद रखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। आखिर केसिंग है क्या, आपको किसी टर्म को रटने की जरूरत नहीं होगी कि रटो, रटना बोलते हैं ना, याद करता है बच्चा। केसिंग मतलब ये कॉन्सेप्ट। IT is based on logic. If you have logic, you can answer any question. Fine. Up. Next concept. I'm also conscious about it. Fine, this is DNS. Then what is DDNS? Now, new concept is DDNS. DNS means domain name system, and DDNS means dynamic domain name system. Dynamic DNS. Now you all are understanding what is the function of DNS. Now we all are able to perform our tasks related to domain and website searching and different things with the help of DNS. But initially when DNS was designed, developers thought only about multiple records, queries, etc. But gradually there is a many change in the network. Users are increasing day by day. Most of people are aware about IT. And now every organization may be related to shoemaking factory,
fly making factory, cold drink making factory, simple or shopkeeper, mall, many medicines. But finally, in all these domains, developers have seen that users means publics are using different domain names and they make different changes with domain. They change their IP address frequently. Fine, no. अब ऑफिस शिफ्ट हो गई, दूसरी जगह जाओ, दूसरी आईपी ले लो, ये काम करो, आईएसपी स्विच कर लो, बहुत सारी बातें आती हैं। अब इस पे नहीं, इस पे रजिस्टर्ड कर लो, ये वाला ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, दूसरे पे ट्रांसफर कर लो, ऐसी चीजें, फैसिलिटी आई, लोग फैसिलिटी अवेल कर। तो जब इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आने लगे, कुछ चेंजेस सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे आप गूगल को ही पिंग करते हैं, देखते हैं कभी किसी आईपी से रिप्लाई आता है, कभी किसी आईपी से रिप्लाई आता है, ये सिक्योरिटी वो स्विच करा। हम नॉर्मल यूजर फ्रिक्वेंटली चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए इसी डीएनएस को अपग्रेड करके बनाया गया डायनेमिक डीएनएस। सो नाउ this dynamic DNS able to handle frequent changes with domain and IP. Fine, work same है, but DDNS is more faster than the DNS. इसलिए जब आप अपनी सिस्टम में भी चेक करेंगे तो आपको DDNS की आईपी शो करेगा। कभी ARP स्पेस -A कमांड डाल के देखिएगा, आपको वहां दिखाएगा कि DDNS है। तब आपके मन में क्वेरी आएगी, साहब हमने तो DNS पढ़ा, व्हाट इज DDNS? Well, so this is DDNS can give you reply of frequent changes with your domain or any domain. Fine. Now, in next class, we will discuss some more services of application layer. Any query? Any question? That's why DNS concept should be very clear.